हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नवीन पांडे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी इंग्लिश बोल पाएँ। गाइस, द बेस्ट वे टू स्पीक इन इंग्लिश इज़ टू प्रैक्टिस एंड टू मेक इंग्लिश योर नीड। द डे you make English your need, the day the beginning of your fluency starts. तो गाइज़, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में इंग्लिश आना, इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना। Why it is important? Because most of our work, most of our books are now available in English. I am not here condemning our mother tongue. It is superb, it is all above the language. But we cannot ignore the things that English has acquired much popularity and it has become the world language. So instead of making excuses that we should not learn other language, we should not forgive our mother tongue, these are just excuses and made up by people who do not want to work hard. So guys, I will say that everyone can learn a language. Learning a language is not difficult, guys. But since we do not practice or we do not bring language in our day-to-day life, and it seems us difficult, but truly it is not difficult. So what my strategy is, I teaches English through news article. News article is the best way to get started with, because here you find almost every words, every vocabulary, every sentences, and how to speak, or you can easily make a sense what is being saying. Okay, so that is why I'm saying that start with reading news article. So today in this video I have covered this news, guys. I'm going to read it out for you, so listen carefully and watch this video till the end. Nothing will otherwise you will gonna achieve nothing. So Raj Babbar supports Shahrukh Khan and Aryan Khan, says fighter's son will fight back. So guys, Raj Babbar, we all know him. He's a veteran Indian actor and a politician, an MP of Congress party. He has come in support of Shahrukh Khan. Raj Babbar said that Aryan Khan will fight back. The senior actor also called Shahrukh Khan a fighter. Raj Babbar has come in support of Shahrukh Khan after Aryan Khan's arrest in the Mumbai cruise case. The veteran actor and politician called Aryan a fighter's son and said that he will fight back. He also praised Shahrukh Khan and wrote that he has known him for a long time and hardships won't deter his soul. Earlier, many other Bollywood celebrities also spoke in favor of Khan and his family on social media. So guys, this is a small paragraph and here you will get 2 or 3 important words like veteran and hardships, deter. So these are the important words that you should learn, and now I will teach the meaning. I will teach you its meaning. Guys, veteran means, now suppose I am talking in my mother tongue. Veteran means होता है guys निपुण. जब आप किसी क्षेत्र में काफ़ी निपुणता हासिल कर लेते हैं तो आपको वेटरन बोला जा सकता है। जैसे जैसे कोई डॉक्टर है जिसे डॉक्टरी के क्षेत्र में काफ़ी निपुणता हासिल हो चुकी है, वो काफ़ी उसमें सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि अ वेटरन डॉक्टर, निपुण डॉक्टर, अ वेटरन टीचर, अ वेटरन एक्टर, अ वेटरन क्रिकेटर.
सो वेटरन एक एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले यूज होगा और उसकी विशेषता को बताएगा, ठीक है। द वेटरन एक्टर एंड पॉलिटिशियन कॉल्ड आर्यन अ फाइटर्स सन and said that he will fight back. He also praised. Guys, praised means होता है तारीफ करना. So he also praised Shahrukh Khan and wrote that he has known him for a long time. Hardships means होता है guys कठिनाइयाँ. Hardships नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं. Hardships are a part of life. कठिनाइयों का सामना करना सीखो. लर्न टू डील विथ हार्डशिप्स. कठिनाइयाँ आपको मजबूत करने के लिए आती हैं. हार्डशिप्स कम्स टू मेक यू स्ट्रॉन्गर. डिटरमिन्स होता है गाइज रोकना. जैसे तुम मुझे पढ़ाई से रोक रहे हो, यू आर डिटरिंग मी फ्रॉम स्टडिंग. तुम मुझे नहीं रोक सकते, यू कांट डिटर मी. हार्डशिप्स वॉन्ट डिटर हिज सोल. यानी कि कठिनाइयाँ जो है शाहरुख खान की आत्मा को रोक नहीं सकती. अर्लियर मैनी अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑल्सो स्पोक इन फेवर ऑफ खान एंड हिज फैमिली ऑन सोशल मीडिया. इससे पहले कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने शाहरुख खान के फेवर में सोशल मीडिया में बातें कही हैं. सो गाइज, इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं और आप भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं. बहुत आसान है, लेकिन समय की मांग इसमें बहुत ज़्यादा पड़ती है गाइज. इट इज़ वेरी इजी, बट ऑल makes it difficult is the time that you have to put in this journey. If you are reading, sacrificing other things for learning this language, then you should get ready. So guys, this is all in this video. I hope you will find it interesting and helpful. I will meet you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Happy learning guys.